Okay. And guys, can you hear me? Okay, fine. So let's start our talk. Let me minimize this thing. And this thing. So as you already know, guys, the topic which I am going to talk about today is a very important topic. Topic is about gene regulation. And I will be talking about not only gene regulation, also on the evolutionary perspective of gene regulation. Uh, my name, as you already know, is Ahmad Aslam Khan. I did my PhD from Karolinska Institute, Sweden. And after doing my PhD, I came back to Pakistan to serve my country. And now I am working for last 3 years or so in Virtual University of Pakistan, Department of Bioinformatics and Computational Biology. So before we talk about gene regulation, I will like to talk to you a little bit about the what is meant by gene and what we have to do with genes and what genes have to do with us. So to understand about genes, it's important to know why we want to understand about genes. The reason that we want to understand about genes is that whatever we are, this is because of two important ingredients we have in our bodies, in our very occurrence. One is the information we have, uh, and this is because of this information that we are what we are. I'm speaking to you because of my tongue, my pharynx, my brain, of course, and lots of other molecules and physiological organs. And this all is based on certain information content which I inherited from my parents, and my parents inherited from their parents, and they from their parents, and they from their parents, and so on. So for millions of years, we, the human beings, or we, the living organisms, have been inheriting our whole blueprint to our offsprings. And this inheritance is it takes place um, in the form of a certain molecule, what we say DNA. And this DNA is the major, or actually the only information material, information molecule which can replicate itself in our body. So, and keep in mind that not all the DNA is gene. Actually, around 96 to 97% of DNA is without any genes. 3 to 4% of our DNA, your DNA, is made up of gene. But then why gene is so important? The gene is so important because these are the genes which are translated into physical entities of our body. And those physical entities of our body are what we say the proteins. So these two molecules, genes or DNA and proteins, are the major molecules which we need to understand. I mean, whether you are a cell biologist, whether you are a molecular biologist, whether you are a bioinformatician or whatsoever, you should know, it should be on your tips, the relationship between gene and proteins. Now, I will come to the general structure of gene now, and we all know that a gene is made up of a promoter, exon, intron, and then during the process in which genes are
no promoter. And then further on, because of the process of transcription, we also lose what we say the introns. So not only the 95% of the DNA is without gene, even 80% of gene, or 70 to 80% of gene, actually, generally speaking, is without any material which will be converted into or translated into protein. Introns are huge chunks, so they will be taken off by the process of splicing, so that a mature mRNA, messenger RNA, consists of only and only in exons. As you can see, we started with P, E1, I1, E2, I2, E3, that is intron, exons, and promoters. And then we got rid of in messenger RNA the promoter and the intron and exons. And finally, we have exons. And these exons then give rise to what we say the formation of protein. This is the most, I would say, simplified schematic representation of formation of proteins from gene. But this is the most important aspect of life. Life without this process is not life. I mean, this is the core of life. When we say then how life came into being, actually we say how the relationship between DNA and protein was built. The origin of life was impossible, absolutely impossible, without genes being coded into proteins. If you see the universe, actually, we are finding for last 3 or 4 decades or so, many molecules. We are finding amino acids, we are finding peptides, we are finding nucleotides, so on and so forth. So these molecules are there, but the relationship between these molecules is established by this, what we say, the central dogma of life. The genes give rise to proteins. So on Earth, as far as we know until now, we know that Earth is the only planet perhaps which have life, which means that Earth, as far as we know, I'm again saying, stressing on this, as far as we know, the Earth is also the only planet in which this central dogma is established. That is, from genes, there comes the mRNA, and then comes the proteins. The information material gets translated into what we say the physical entities. Information material which you got from your parents in the form of DNA, and finally the gene, and the physical entities are the proteins. Fine. Now, if we see this one single figure, again, this is a beautiful, beautiful representation of this whole central dogma. See, you can see many things here, although it's a very simple figure, but see the beauty of nature here. And how lucky you guys are as biologists. I know I'm talking with all of you are biologists, whether you are in the department of biotechnology, whether you are in the department of bioinformatics, whether you are in the department of molecular biology or whatsoever, you are biologists. We are the student of biology. And how lucky we are that we are studying the most sophisticated phenomena in the whole universe. Even if we find universe, life in other planets, I'm sure nothing will be more sophisticated, more complicated than life. I'm sure about it. And look at this one simple figure. What you can see, apart from the molecules we are seeing, I will be talking about these molecules. See the overall figure. It has a circular, one circle, and that one circle is your cell. And then another circle, and that another circle is nucleus. There are many other circles are not shown here. That may be mitochondrion, that may be Golgi bodies, that may be lysosome, and so on, so forth. But still, the compartmentalization can be very evidently been seen.
And this compartmentalization is some of the most, I would say, remarkable aspect of life, of living things. In nucleus, you have your information material, the DNA. In nucleus, this information material gets transcribed into RNA. From nucleus, this RNA gets transported, gets translocated in cytoplasm. In cytoplasm, you then have mRNA, which, if you can see, that is occupied by ribosomes. Then those ribosomes then dictates the process of protein synthesis through tRNA, and you get the proteins at the end of the day. And these are the proteins which make Ahmad, which make Mobeen, which make Riaz, and so on. These are the proteins because of which I am talking with you. My brain is functioning because of neurons, and these neurons are commanding me to say whatever I am saying. And by the way, what are neurons? Neurons are cells which have lots and lots of pumps. You all have read in metric, in FSC classes, the sodium potassium pumps, the calcium pumps. These all pumps are proteins. So even my single word depends upon the functioning of proteins. And this protein would have never been there if there was no process of transcription and translation. So this is why this is the most important phenomena as far as life is concerned. In 1953, Watson and Crick discovered the DNA structure. In 55, Crick told us, on the basis of his mere speculations and his brain power, his perceptions, his conceptions, he told us that perhaps there is a relationship between DNA protein, and that relationship could only be formed if we took a gene, consider a gene as made up of codons. Each codon consisted of 3 nucleotides each, which we said triplets or codons or whatsoever. And each codon then correspond to 1 amino acid. Specific amino acids have specific codons. An amino acid may have more than 1 codon, but a codon cannot be for more than 1 amino acids. So this is the, what we say, the holy grail of biology. This table is everything actually. It shows that how triplet codons corresponds to amino acid, UUC for phenylalanine, UUA, UUG for leucine. Then there are CCU and so on for proline, then threonine, then alanine, then aspartic acid, then glutamate, asparagine, glutamine, arginine, and so on and so forth. Methionine, AUG in mammals, in vertebrates, in you and me, in snake, in lion, in tiger, in whale, in fish, and so on and so forth, is the initiating amino acid in all of us. Each and every of our proteins starts with methionine. Wait, let me see if I have any question answered, because people, okay. E-certificate will be provided. I think you should first learn what I'm saying, assimilate what I am saying, try to understand, and then come to the reward. Certificate तो यार हर जगह मिल जाते हैं, वो मिलेंगे आपको जो भी होगा, लेकिन at the moment you should be focusing on my talk. Sir, your screen is not visible. Screen is not visible. Is it true? Can someone tell me that my screen is not visible? Visible hai, it's a visible. Okay, fine.
ओके फाइन। ओके, मैं आप लोगों को ये ओपन करके रखता हूँ सारे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग क्या कह रहे हैं। नाउ Crick was the person who just hypothetically, on the sheer power of his imagination, he said, he showed to us that perhaps three nucleotides make a codon, on each codon then correspond to any amino acid. And this is the beauty of science. People say science needs money. Nonsense. Science only needs motivation. Science needs honesty. And science needs curiosity to learn. If you have these three ingredients in you, motivation, honesty, and curiosity to learn, curiosity to know the unknown, then you can do anything, everything. And we will talk about it later when I will be talking about the research part of this discussion. Okay. Now, you all know this figure. This is when I was very, very young, extremely young, when I was 1 cell old only. My mom and my father, they donated their cells, their gametes, sperm and egg, which fused each other and gave rise to zygote. And this was my very start of myself. I was born, of course, 9 months afterwards, as everyone else have born. But our conception starts when zygotes gets implanted in the womb of mother. Then this happened. One zygote turned into 2 cells, 4 cells, 8 cells, 16 cells, 32 cells, 64 cells, until there was millions of billions of cells. Not only millions of billions or millions and billions of billions of cells. By the way, this process is taking place through the process what we say the mitosis. You have been reading about mitosis from your middle class, from your matriculation, from your higher secondary education, that is the FSC, that it is the cell division which takes place in the somatic cells. Of course, the cell division which takes place in the germ cells, in the sperm and ovum, is the meiosis. And it is because of mitosis that from one cell we become this one. Now, this is unbelievable thing. That cell, which was a circular shaped cell, it became into a circular shaped organization of millions of cells. And then there also was taking place certain differentiation processes in these cellular organizations. And because of these differentiation processes, an embryo took place. And that embryo then turned into a fetus. And fetus is fully developed embryo, I would say, very mature embryo, later stage than embryo. And when fetus is absolutely, totally mature enough, then it gives rise to this one. Isn't it a beautiful figure? I mean, this is you when you were born. This is me when I was born. This is all of us when we were born. This is one of the most, I would say, beautiful part of our lives. Then our children are born in our families. Many of you might have got married, and you know I am a married person, so I know what this figure means. But this all beauty of this figure, we owe it to, of course, the blessing of Allah Ta'ala, no doubt about it. But also we should know how nature have made all the machinery which gave rise to this beautiful, beautiful child. And this child, of course, if you see this child on the face of it,
you can't see central dogma, important central dogma, but you are a biologist, you can see when we talk about proteins, when we talk about genes, when we talk about transcription, when we talk about translation, that how a child is born, what sort of machinery is involved, then you can understand it more. And if you see, of course, internal structure of us, the figure, no matter how beautiful it was from the upside, but on the face of it, but inside it, it may not look that beautiful, but of course, it's wonderful. And you have compartmentalization of your cells into your cell, and you have also compartmentalization in your body. You have blood as a very important tissue for the transportation of oxygen and other material. You have lungs, you have liver, you have kidney, you have small intestine, stomach, brain, heart. These all organs and organ systems, they owe so much on the formation of proteins from DNA through the central dogma. There is no doubt about it, no doubt about it. But, and this but is very important. And you think, yet from your mom or your dad, you inherited chromosomes. My mom gave 23 chromosomes to me. My dad gave 23 chromosomes to me. And when I was a zygote, I had 23, and half part from my walida and half part from my walid sahab. And then mitosis process, after the process of mitosis, repeated mitosis, the same cell, the same genome was replicating, and same cells were duplicating, and whole organism like human being or me or whatsoever was formed. Then a question, natural question must arise in our mind. The same genome, I mean, each cell, we are coming, my eye cell, my nose cell, my lip cell, they're coming from one single same cell, which was a zygote. It is a result of the process of repeated mitotic divisions. These cells were not thrown into the body. They were coming from the already pre-existing cells. And this is what you study from, you have read in your textbooks, Schwann-Schleiden cell theory, that new cells come from the pre-existing cells through the process of cell division, isn't it? So now I think the question which should come in your mind is that how come this such a diversification occurs from the same cell. Same cell contains the same genome contains the same genes. And genes are, what are the genes? Genes are A, T, C, G, C, C, A, C, G, C. It's a combination of it. Then how come the same genome which we inherited from same parents give rise to such a big, huge diversity, isn't it? And this is a very, very fundamental question, very important question. So we have talked about central dogma, but then there is something else also. In addition, that is a part of central dogma, but we can't see it on the face of it, but which is lying there somewhere. And that diversity we can see here all around us. When I say Ahmad or human beings, as a biologist, the same hold, I have to say that the same hold true for all the living organisms, whether it's a starfish, whether it's a jellyfish, whether it's a mammal like lion, whether it's an arthropod, whether it's plants, they all contain the same genomic material. The same genomic material go through same fertilization process, same zygotic formation, same mitotic divisions, same transcription, translation, and replication, and so on and so forth. So how comes this whole diversity? From where it comes? Again, let's see this figure again. This is what we see. We'll say the first code
of life that genome give rise to proteins. Then if you see the structure of gene more closely, you will see it's in the start of a gene, there is this promoter. Exons give rise to proteins. Introns are spliced off. Then what this promoter is doing? The promoter is actually one of the main agency which control the switching on and switching off of genes. And this is very important. For instance, if we see again this figure, so let's say there are certain genes which are involved in the formation of heart, so that heart can beat. So these genes will be switched on in heart. I'm talking in very layman terms so that you can understand. But the genes which are involved in photoreceptors, like in eyes, they will be turned off in the heart. So that in heart, only those genes will be turned on which are important for the formation of heart. Same is true for brain, same is true for lungs, same is true for kidney, and same is true for gastrointestinal system. So that this turning on and turning off of gene gives rise to this physiological diversity we see in our bodies. And this we owe so much to the promoters, because promoters have certain organization of nucleotides that certain proteins can bind with it, and they can turn the whole gene on or off, or gives rise to transcription of certain proteins. I mean, keep in mind that transcription is a very, very important, it's even more important process than translation, because it's the process of transcription that governs that how much protein will be formed at the end of the day. So more the process of transcription, that is more the messenger RNA being formed, more the proteins will be formed at the end of the day. So transcription is a hugely important process. And the transcription depend upon, if you see the structure of the gene more closely, we have a heterochromatin. Heterochromatin is the region of the your gene, or not on gene, or of the DNA, which is not functionally important, which is structurally important though, but it's not involved in function. And then there comes the promoter, this promoter. And on this promoter, this transcription factor, RNA polymerase 3 or TF2 mediators, and many transcription factor binds, and it gives rise to the transcription of a gene. It is because of this promoter that silencing of the gene occur, insulation of the genes occur, more controlling of the expression of the gene occurs. So switching on and switching off mean the formation of transcription of mRNA, or more formation of mRNA, or lesser transcription of giving rise to lesser formation of mRNA. So if the gene is switched off, nil or very less mRNA formed. If gene is switched on, more and more RNAs formed, mRNA is formed. If we let's see, if we go to see the gene from ensemble through ensemble, let me open here ensemble. Ensemble, let me tell you guys, students, ensemble is one of the most important and widely used database of genome. Would you want to study genes individually, or you want to study genes in bulk, or you want to study whole genome? If I'm not wrong, it's even more useful than NCBI in many respects. NCBI again is the most fundamental, one of the biggest database of genome. But as far as utilization of those genes for your analysis is concerned, I use BLAST. I use this very frequently. Let's say we search any gene. Let's say a gene on which I worked during my PhD is FAMT.
from T2, let's say from T, and we say put it in under search, and it will show us as, it's showing us this. So you can see this ensemble, by the way. What ओके, थोड़ी सी उर्दू में भी बात करें निर्मा, ठीक है निर्मा, we will do it, but I am trying my level best. I am speaking in most simplified English. So Juvegi is saying no, you can't see ensemble. Okay, let me show wait. अच्छा, क्या कह रहे हैं? ओके, दिस वन, हाँ वो उसी में याद. ओके, लेट्स सी now can you see the ensemble? Good. So मैंने क्या किया है कि I went into ensemble database, I put the gene of my interest into search tab. This is here is the search tab, and it gives it gave me many entries. The uppermost entry, जो सबसे ऊपर वाली entry है, that is the form T2. ये ले जी, मैंने इसको क्लिक किया. So after clicking, you can see this gene. There are many interesting things about gene. I hope I will be one day. I am planning to host or organize a workshop on certain genomic tools. One of them is ensemble, of course, and then maybe I will teach to you how to play with ensemble. But at the moment, I just want to show you whatever I'm showing in the context of today's presentation. अच्छा, यहां देखिए, अगर आप look at this, ये जीन है, ठीक है, ये उसकी सीक्वेंस है, ये स्टार्ट हो रही है, और ये देखते जाएं इसको. अब मैं नीचे, मैं चलता जा रहा हूं, इस पर चलता जा रहा हूं, देखते जाएं. ये ही है, यानी कि a bunch of nucleotides, that's all. लेकिन अगर आप और करें तो कहीं से ये कलर डिफरेंट है इनके, कहीं से रेड कलर में, कहीं भी फिर ट्रांसपेरेंट है, और फिर कहीं रेड कलर में है, ठीक है. एंड दिस इज बिकॉज ये जो रेडिश कलर में है, ये वाले, ये एक्सॉन्स हैं, और ये जो कलरलेस हैं, ये इंट्रॉन्स हैं, ठीक है. तो इस तरह ये जीन स्टार्ट होती है, उसके ऊपर वाला हिस्सा जिसको 5 प्राइम एंड कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जिसको 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम जो रीजन होता है, और बीच में उसके एक्सॉन इंट्रॉन्स, और एक्सॉन्स के ऊपर का जो 1000 बेस पेज का रीजन होता है ना, ये फर्स्ट एक्सॉन्स के ऊपर का जो रीजन होता है, दिस वी से द प्रमोटर, ठीक है. ये जो प्रमोटर होता है ना, ये आपको जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है. अब हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं. ओके मायरा, ठीक है, हम इसको हैंड्स ऑन करेंगे बिल्कुल. ओके, अच्छा, अब हम इसको मैं रेसिपी प्रेजेंटेशन मोड में ले आऊं. ओके, अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच में, लेकिन ये बाद में फिर हम जैसे ही मैं ये टॉक खत्म करूंगा तो बीच में आपके साथ शेयर करूंगा क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी. तो लेट्स से इसको हम रखते हैं अभी, और बाद में मैं माइक्स भी ओपन करूंगा आपके क्वेश्चन आंसर्स के. अभी हम इसके टॉक के कुछ पार्ट्स खत्म करते हैं. अच्छा, नाउ ओके, ये हमने हो गया आपके साथ. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो जीन एक्सप्रेशन, मिसाल के तौर पर जीन रेगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर जीन रेगुलेशन में कोई मसला आ जाए, तो एक आपको दुनिया की, आपको पता है, एक ऐसी बीमारी जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक चैलेंज है हमारे लिए, वो कैंसर है. गो के वी हैव डन अ लॉट टू ट्रीट कैंसर, or to deal with cancer at least.
बट ऑफ कोर्स स्टिल इट्स अ बिग चैलेंज। और जो कैंसर है उसमें actually cancer is not thing, but it's just dysregulation of gene regulation. Gene regulation gets interrupted, so the genes which can prevent cancer formation, their regulation gets disrupted, and as a result या तो उनकी बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन होता है या बहुत कम एक्सप्रेशन होता है, दोनों सूरतों में आपको कैंसर हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें तो कैंसर होता क्या है, कैंसर वो है कि आप वो सेल जिनको डिवाइड नहीं होना चाहिए वो डिवाइड होना शुरू होते हैं एकदम से। आप जब तक एम्ब्रियो बनकर आप पैदाइश से पहले जब आप एम्ब्रियोनिक फेज में होते हैं सब डिविजन हो रही होती हैं, फिर वो डिवीजन बंद हो जाती हैं हमेशा के लिए ताकि दोबारा से मसला ना हो क्योंकि ऑर्गन्स बन चुके हैं। लेकिन इवेंचुअली समटाइम इट हैपेंस कि म्यूटेशंस टेक्स प्लेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दोस म्यूटेशंस न्यू न्यू डिसफॉर्म्ड सेल्स स्टार्ट बीइंग फॉर्म्ड, और जब वो बनना शुरू होते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। And these mutations, we have now known that many of these mutations, majority actually, predominant majority of these mutations occurs in the gene regulatory regions. ठीक है, तो cancer is actually we would say this is why we say that cancer is very much epigenetic in nature. It's an epigenetic phenomena because epigenetic is the deals with the regulation of the genes. ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए how important is to study gene regulation. अच्छा, evolution और gene regulation का क्या ताल्लुक है? जीन रेगुलेशन जिस तरह ड्रोसोफिला में ह्यूमन में जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें जो जीन रेगुलेटरी जो रीजन मिसाल के तौर पर प्रमोटर है जैसे दे आर वेरी वेल प्रिजर्व्ड। खुद मेरी पीएचडी में मैंने एक पार्ट इसमें किया था और मैंने शो किया था कि जो मेरी जीन फैमिली है जैसे फर्म जीन फैमिली जिसको कहते हैं, द प्रोमोटर्स आर वेरी वेल प्रिजर्व्ड। व्हाई प्रोमोटर्स आर प्रिजर्व्ड? बिकॉज प्रोमोटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द जीन रेगुलेशन। तो इससे हमें पता चला कि somehow studying gene regulation is as important as is the study of the evolution of gene regulation is important. Fine. So what are the salient features? That's a very shortly. You all have read, studied this during your matriculation and FSC. मुझे याद है मैं FSC में मेरा फिजिक्स का पेपर होता था, सुबह तो मैं रात को नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पढ़ रहा होता था, मुझे इतना इसका मजा आता था। तो ये एक खूबसूरत थ्योरी है। It's a wonderful thing to sum up life in most logical way. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है कि हम बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हमसे मुराद तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं जितना कि हम उनको रोटी खिला सकते हैं, जितना कि हम उनको शेल्टर दे सकते हैं। और हमसे मुराद मछलियां भी हैं, हमसे मुराद कीड़े भी हैं, हमसे मुराद शेर भी है, हमसे मुराद हमाद भी है। all the living organisms we have the tendency to produce much more as compared to our ability to nourish our offspring, to protect our offspring. तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है फिर बीच में, और ये कंपटीशन हम आए दिन देखते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में आए दिन आप देखते हैं कि एक खास रीजन में the whole population is under danger because somehow their competition ability is no longer adaptable to the environmental changes or whatsoever. So competition is a very, very important ability of living organisms. Then there is variations. We know that variations are there. मैं आप हम सब बैठे हो तो हमें आपस में इतनी variations आ जाती हैं, of course. And then there are variations in living organisms. And these are the variation upon which the environment works. तो जो वेरिएशन ज्यादा अच्छी होती हैं, अडेप्टेबल होती हैं, जिसको अडेप्टेशन कहते हैं, वो वेरिएशन सेलेक्ट हो जाती हैं, जो वेरिएशन अच्छी नहीं होती वो रिजेक्ट हो जाती हैं। दिस इज द evolutionary theory in the what is of molecular evolution. Of course, देखिए ये जो आज का जो दौर है ना, आप सिर्फ ऊपर की स्ट्रक्चर्स को पढ़कर
आप हड्डियों के बारे में जानकर ये नहीं समझ सकते लाइफ को जान रहे हैं, आप मसल्स के बारे में पढ़कर ये नहीं समझ लाइफ को जान, लाइफ की डेप्थ में जांचने के लिए आपको मॉलिक्यूलर स्टडीज का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए बायोलॉजी इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फंडामेंटल, चाहे बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे कोई भी है, उसमें हम मॉलिक्यूल्स को जब तक नहीं जानेंगे हमें नहीं पता चलेगा। सेम इज ट्रू फॉर इवोल्यूशन आल्सो। आप जराफे की गर्दन के माप से ही सी इवोल्यूशन को समझ सकते जो डार्विन के दौर में था। आज के दौर में इवोल्यूशन बहुत प्रोग्रेस कर गई है। आज की इवोल्यूशन मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की स्टडीज है। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की फंडामेंटल क्या है फीचर है, वो ये कहता है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन करने वाले कि द म्यूटेशंस आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन आवर जीनोम, बिकॉज इफ वी सी दिस इज द प्रोसेस ऑफ, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन द न्यूक्लियोटाइड्स आर being implanted on the, I mean, being added for the formation of the new strand of the DNA, and then the two new strands, when they are formed the DNA, we have new strands of DNA, which give rise to duplication of the DNA. But the thing is that through during this process of replication, when the nucleotides are being added, there is very possibility that a wrong nucleotides get added, एक गलत न्यूक्लियोटाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड जाके ऐड हो जाती है, and that causes the variation. This is the major reason of variations, ठीक है। और वही वेरिएशन फिर म्यूटेशंस कहलाती हैं, और यही म्यूटेशन पर फिर आपका एनवायरनमेंट एक्ट करता है। जो म्यूटेशन अच्छी होगी एनवायरनमेंट के मुताबिक आपको अडेप्ट कर सकेगी, वो सिलेक्ट हो जाती है। लिहाजा अगर अमाद का और चिंपैंजी का जीनोम आपस में कंपेयर करें और अमाद का और मछली का जीनोम आपस में कंपेयर करें, तो आपको साफ डिफरेंस नजर आ जाएगा कि अमाद के और चिंपैंजी के जीनोम में वेरिएशन कम है। यही वजह है अमाद और चिंपैंजी एक दूसरे के ज्यादा मुमासलत रखते हैं, दे आर मोर सिमिलर टू ईच अदर, why the amad and fish genome are much more different, as that is why amad and fish are very far away from each other, and amad and butterfly are absolutely far away, and amad and paramecium almost, I mean, the divergence is so much that even at genome level sometimes you can't recognize a gene that it's from a paramecium or from amad. The divergence has taken so much. Okay, now let's we move forward. जी, then again जाहिर बात है जब रेप्लिकेशन होती है तो मैसेंजर आरएनए में एरर्स आती हैं और वही आरएनए आपकी प्रोटीन में आ जाती है, तो फिर नस्ल दर नस्ल चलती है, ठीक है। तो देख लें सेंट्रल डोगमा तो बार बार आ रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, एंड व्हाट अबाउट जीन म्यूटेशन इन जीन रेगुलेटरी, वही मैंने अगर आपको दिखाया है कि लेट्स से हम दोबारा इसको लेकर जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ, ये एग्जाम्पल में लिखे जाए। अब ये प्रमोटर रीजन है, ठीक है, ये प्रमोटर रीजन है। इन दिस प्रमोटर रीजन the variation does occur, that these variation will definitely give rise to the formation of new variations, और उसकी वजह से हो सकता है कुछ ऐसी वेरिएशन आ जाए जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन बहुत बढ़ जाए। आप देखो ना यार, अमाद जो है उसकी बॉडी को देखो, तितली की बॉडी को देखो, बहुत फर्क है। ये फर्क कहां से आया? इसका मतलब है कि जीन्स की एक्सप्रेशन लेवल बहुत डिफरेंट हो गया है। तो वेरिएशन जो प्रमोटर में आती है इतना फर्क भी डाल सकती है, जिसकी वजह से, और हम देखो जहां क्वालिटी इंपॉर्टेंट है वहां क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा प्रोटीन बनेगी उतनी डाइवर्सिटी भी आ रही है। मेरे दिमाग का वेट बहुत ज्यादा है वॉल्यूम एज कंपेयर टू द फिश ब्रेन वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम के ब्रेन को कंट्रोल करने के वास्ते जो नीड मोर प्रोटीन आल्सो, तो जीन एक्सप्रेशन का भी साथ इवोल्यूशन पर उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, देन वी अगेन मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ओके, सही। Now my research
क्या है ये, मैं इसमें बहुत शॉर्ट रहूंगा क्योंकि अभी आप लोग बीएस के ज्यादा बच्चे हैं और एमएससी के हैं, एमएस के कम है, तो मैं रिसर्च को ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसको मैं बहुत, आई विल बी फास्ट आल्सो बिकॉज़ वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। लेकिन मैं सिर्फ ये रिसर्च में पार्ट में आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि रिसर्च हम करते कैसे हैं, और यही आपने करना है जब आपने एमएस में जाना। खुदा के वास्ते आपने ढेरों के ढेर कॉपी पेस्ट नहीं करनी। यू हैव, आई मीन यू हैव टू थिंक, unless you think, unless you imagine, unless you observe, you can't be a scientist. Simply. And you are going to do MS and PhDs to become scientists. That's how. You are a future researchers. And there are certain things you should always keep in mind when you will be doing research. First of all, you should think. आपने सोचना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोचो। और उससे भी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शौक भी होना चाहिए। शौक के बगैर अगर आप कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। शौक भी हो और फिर इमेजिनेशन पावर आप में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा पीएचडी में इवोल्यूशन एंड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलर किडनीज, तो मैंने अपने सुपरवाइजर को, मेरे को इवोल्यूशन का इतना नहीं था पता, लेकिन मैंने खुद से इवोल्यूशन वाला पार्ट मैंने खुद से डिजाइन किया सारा, और मैंने आउटसोर्स किया लोगों को। स्वीडन में तो मैं कर ही रहा था, जर्मनी में, अमेरिका में जो बड़े बड़े प्रोफेसर से उनकी हेल्प ली कि मुझे बताएं कि किस तरह होगा, और फिर बहुत कुछ चीजें जो सीखी वो मैंने खुद अपने ये मोटिवेशन की वजह से सीखी थी। Again, I have sort of promoter is the key for gene regulation. I studied कि मैंने सोचा, ये मेरा इस तरह रिसर्च जो मैंने पिछले दिनों कर भी रहा था और अभी हमारी चल रही, मेरे है एक दो पेपर्स हमारे रिव्यू में भी हैं। तो क्वेश्चन ये था कि promoter have something to do, such important thing to do with regulation. So why shouldn't we see the promoters for gene evolutionary landmarks? ये promoter elements हमने पहले बात कर ली है। एक क्वेश्चन ये आया, देखिए हमने प्रोमोटर की क्या चीज हम उसको फोकस करें, तो हमने देखा कि जो प्रोमोटर को हम गौर करें ना, तो जो पूरे मेटाजोन्स हैं जितने भी, यानी कि जो जानवर वगैरह हैं, जो लेट्स से वो एनिमल जो कि सिलेंट्रेटस से अपवर्ड हम तक हैं, सिलेंट्रेट है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैं, कॉर्डेट्स वगैरह में। एक चीज है कि जो जीनोम को हम देखें, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी एग्जाम्पल में, उसमें सीजी बहुत कम है और एटी ज्यादा है। उसकी वजह यह होती है कि जो साइटोसिन है ना, उसमें टेंडेंसी होती है कि इट गेट्स कन्वर्टेड वेरी इजीली इनटू थायमिन, उसकी मिथाइलेशन होती है, इसको मिथाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। लिहाजा साइटोसिन और गुआनिन कम से कम होते गए और एडेनिन थायमिन ज्यादा होते गए। ये है एक कॉमन फीचर है मेटाजोन्स का। मगर हम में, मैमल्स में जरा डिफरेंट है ये चीज काफी। हमारे में जो हमारे जीन्स हैं, इनके प्रोमोटर्स में सीपीजी आइलैंड्स बन गए हैं, यानी कि सी और जी एक दूसरे से एग्रीगेट कर गए हैं, वहां मिथाइलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपके सीपीजी आइलैंड्स क्रिएट हो गए। और ये सीडोजीन्स के बारे में मैं आपको नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बता दूं कि वो जीन्स जो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनाती जैसे कि नीचे है, उनको सीडोजीन्स कहते हैं। तो मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आया कि इसको रहने दें, ये अभी आपके लेवल की चीज मैं पहले मैंने कहा मैं कराऊंगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसमें आपको सिर्फ यूनिटरी सीडोजीन्स का आप देख लें। यूनिटरी सीडोजीन्स ऐसी हैं कि जो अमाद में फंक्शनल है मगर माउस में नॉन फंक्शनल है, या वाइस वर्सा। माउस में फंक्शनल है लेकिन अमाद में नॉन फंक्शनल है। तैयबा यही यूनिटरी को समझ आएंगी तो अब सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो ये यूनिटरी सीडोजीन्स है, ठीक है। यानी कि जो एक स्पीशीज में फंक्शनल है, दूसरी में नॉन फंक्शनल है। इसका मतलब है कि एक स्पीशीज में शायद समहाउ उनमें फंक्शनल कंस्ट्रेंट कुछ ऐसी हो, वो सीडोजेनाइज्ड होगी। अच्छा, तो इससे हमने क्वेश्चन सोचा, मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने, यार, और ये थिंकिंग प्रोसेस है कि there is something special perhaps in the unitary सीडोजीन्स। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम देखें कि जीनोमिक्स में, यानी कि सीपीजी आइलैंड यूनिटरी सीडोजीन्स में कैसे हैं, और हम फिर ये देखकर हैरान रह गए
कि जब हमने सोचा और देखा तो हम ये देखकर हैरान रह गए, ये ग्राफ्स हैं, इसे बताया है, ये डाटा है। डाटा कलेक्ट करने के लिए सारी रिसर्च करते हैं और डाटा ही सारी साइंस होती है। डेटा में हमने देखा कि जो ह्यूमन हो या माउस हो, उसमें जो जीन्स हैं यूपीजीज में, उनमें विदाउट यानी यूनिटरी सीरो जीन्स में सीजीआईज के बगैर बहुत सारी जीन्स हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जीन्स यूनिटरी सीरो जीन्स वर विदाउट सीपीजी आइलैंड्स। उसने हमें सोचने पर मजबूर किया, ऐसा क्यों है? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। तो उसको हमने फिर फर्दर एनालिसिस किया, तो फिर हमने सोचा कि शायद सीपीजी आइलैंड का ना होना एक काजिंग इवेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट नहीं है। काजिंग इवेंट का मतलब जैसे सीपीजी आइलैंड कम हो गए तो जीन सीरोजेनाइज इस वजह से हो गई। कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट ये होना था कि जीन सीरोजेनाइज होगी, उसकी वजह से सीपीजी आइलैंड्स कम हो गए। तो हमने ये शो किया कि ये ग्राफ में, कि मतलब मैं इस ग्राफ की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने ये शो कर दिया कि हाँ इट इज मे बी काजल, ये एक काजल इवेंट है, सीपीजी आइलैंड का ना होने से जीन सीटोजेनाइज हो रही है। इस पर फर्दर स्टडी इन चीजों की हमने एक और पेपर में भी पेश की, फिर वो चल रही है अभी बातें, और इस तरीके से हो गया। और फिर हमने दूसरी जीन्स में भी बताया कि सीपीजी आइलैंड्स क्यों लैक हो गई, क्यों कम हो रही है। वो उसमें हमने बताया कि वो एक इसके में वो हमने बताया, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये एक रिलेटेड स्टडी है। तो हमने कहा कि ये कॉन्सिक्वेंशियल होगी। यहाँ बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सारा डेटा दिखाऊं, मकसद ये है कि क्वेश्चंस आपके जहन में आने चाहिए कि ये ऐसा क्यों है। जब आप ये कहते हैं ना ऐसा क्यों है, या ऐसा है, या ऐसा क्यों नहीं है, ये तीनों चीजें, ऐसा क्यों है, ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं तो कैसा होता, ये वो चीजें जो आपको फिर डायरेक्ट करती हैं कि आपने किस तरह का डेटा लेना है, किस तरह अपने क्वेश्चन को आपने आगे लेके चलना है, और उनको कैसे आंसर्स ढूंढने हैं। और हमने कह दिया कि ये कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट है। ये हमारे पेपर्स छपे थे, और इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये पब्लिकेशंस जो होती हैं, अच्छी पब्लिकेशंस, वो एक रिसर्चर का, साइंटिस्ट का सब कुछ होता है, याद रखिए, ठीक है। और वही, और ये मेरे स्टूडेंट्स के साथ थे, और ये मैंने फिर उसमें से शॉर्ट स्टोरी निकाली थी, वो भी, ये भी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम था। देखो मैसेज क्या है सारी टॉक का। देखिए साइंस ये नहीं है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, पैसा आपको मिलेगा यार, डोंट वरी। आपको स्टेटस भी मिलेगा, आपको इज्जत भी मिलेगी, लेकिन जो मेन चीज है वो तो बीच में हो ना, कि आप कुछ समझना चाह रहे हैं, कुछ लर्न करना चाह रहे हैं। अगर वही ना हो तो बस फिर तो आप जाकर यहाँ चौहान नानटकी वाला करोड़ों रुपए कमाता है। हाँ लिटरली ऐसे ऐसे ऑर्डर आते हैं उसको। ये निहारी वालों को जाके देखें, हमदी निहारी लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। तो अगर पैसा ही सब कुछ है, वो भी तो कर रहे हैं ना फिर। तो इज इट व्हाट यू वांटेड टू साइंस फॉर? नहीं। तो ये है कि आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इनाम। अल्लाह ताला देता होता है, और इनाम लाजमी नहीं कि डॉलरों की सूरत में आप लेना चाहें। खुदा ताला बहुत तरीकों से नवाजता है, ठीक है। इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, शोहरत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीज आपको मिलेगी, लेकिन भाई पढ़ो तो सही, मेहनत तो करो, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, और अभी भी कुछ कुछ साथ कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हम भी स्टूडेंट अब, और हम अभी भी स्टूडेंट हैं, तो ये है, ठीक है। नाउ मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन कर रहा हूँ इस फोरम को। आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, और हैंड रेज कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग हैंड रेज करेंगे ना, तो फिर मैं माइक को ओपन कर दूंगा। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स गाइस? कैन आई सी द हैंड रेज?
Okay, 2 participants raise their hands. Let me see who are those participants. Okay, wait, अभी मुझे पता चल जाएगा. अच्छा, 20 आंसर कहाँ. Let me see, मुझे रेज हैंड नजर आ जाए. अच्छा, रेज हैंड नहीं नजर आ रहा इसमें. आंसर लेट मी सी किसी रेज हैंड दूसरी जगह से नजर आए. अच्छा ये है. अच्छा इसमें मुझे सिर्फ मुबीन नजर आ रही है. मुबीन अपने आप को अनम्यूट करें जरा, कर सकती हैं? मुबीन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सुहेल साहब आप हैं इधर? जी इमाद साहब, ये मैंने अनम्यूट कैसे करना, मुझे रेस हैंड 3 उसमें दे हैं लेकिन नजर एक ही आ रही. अच्छा मुबीन नहीं बोले, आप अनम्यूट. जी बोले. सर. जी जी. सर इसे मैं बोल तो मेरा नाम तैयब है सर. हाँ एक तैयब बोलो. कॉन्सेप्ट था. मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ बायोटेक में, इधर वर्चुअल में. तो जी जी काफी अरसे से हम ये पढ़ रहे हैं कि जीन्स होती हैं, जीन्स पर अलील्स होती हैं, ठीक है ना. जी तो जी जीन्स का जी कॉन्सेप्ट तो हमें समझ लग गया, ठीक है. अब ये जी. अलील्स क्या होती हैं? अलील्स हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की, लेकिन ये हाँ हाँ मौजूद हाँ कहाँ पे होती है, ठीक है ना. ये बहुत हाँ सारा हाँ, मैं कंसेप्चुअल समझ भी है गया. और एक ना हाँ मिक्स करने वाला है. आप काइंडली इसके हाँ बारे में कुछ बता हाँ दीजिए, ये हाँ. कहाँ अच्छा, एग्जिस्ट करता हाँ बिल्कुल. हमने भी जब एफएससी में पढ़ते थे तो ये रटा लगाया था, अरे आदि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स. लेकिन ये अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? आई मीन नो वन वाज टेलिंग अस. आई टोटली कैन अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन. लेकिन होता ये है कि देखो, होता इसको इस तरह समझो कि कोई भी जीन है, एक मेरी अम्मी ने मुझे दी है, एक मेरे अब्बू ने दी है. क्योंकि एक क्रोमोसोम अम्मी ने दिया है, एक क्रोमोसोम अब्बू ने दिया है. लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 1 है. क्रोमोसोम नंबर 1 वालिद साहब की तरफ से आया, उसको 1 कह दिया. जो वालदा की तरफ 1 डैश कह दिया. अब 1 पर लेट्स से कोई जीन ए है, ठीक है. अब उस ए जो अब्बू की तरफ से आया, उसकी पर जो जीन ए है, उसकी जो ए डैश होगी तो वो अम्मी की तरफ से आने वाली जीन होगी ना, उसी की होमोलॉग जो जीन होगी जो वालदा की तरफ से, वो एक दूसरे की अलील है. यानी एक ही जीन जो चूंकि जोड़ों की सूरत में आ रही है ना, आपके 23 क्रोमोसोम आए हैं, तो हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो जोड़े की सूरत में है. एक अम्मी की तरफ से, एक अब्बू की तरफ से, एक अम्मी की तरफ से, एक अब्बू से. हीमोग्लोबिन अम्मी से, हीमोग्लोबिन अब्बू से. कैराटिन अम्मी से, कैराटिन अब्बू से. फर्मेटिन अम्मी से, फर्मेटिन अब्बू से. जो अम्मी से आई वो एक जीन, और जो उसकी फर्मेटिन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, अलील है, जो अब्बू से आई. ये सिंपल 3 फॉर्म में ये है. इसको ये अलील का कॉन्सेप्ट है कि बस हर ठीक है एक सर, में समझ जोड़ो. गया. समझ गए? जी जी. मसल दो दो हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम 13 पेयर की, ठीक है ना. हाँ हाँ उस पे बिल्कुल. हमारे पास दो दो क्रोमोसोम्स हैं, वो होमोलोगस हैं एक दूसरे हाँ के. बिल्कुल अब बात बिल्कुल. करते हैं कि रीजन है जहाँ पे दो हमारे पास जीन आ रहे हैं, ठीक है. वो हाँ बिल्कुल. स्पेशल करेंगे, वो आई कलर या हेयर कलर की जीन्स हैं, ठीक है हाँ ना. एक हाँ अम्मा की तरफ बिल्कुल. से होगी और एक अबू. उसमें से एक ने सप्रेस हो जाना है और एक ने डोमिनेट हो जाना है, ठीक है ना. मैं भी और लाजमी नहीं, लाजमी नहीं. देखिए मेरी बात हाँ. सुनिए, जब हम ये जब हम कहते हैं ना डोमिनेट हो जाए, लाजमी नहीं है. ये तो वो मेंडल बड़ा सीधा बंदा था, उसने कुछ देखो यार पेपर भी छापना था, तो उसने वो चीजें छोड़ दी बीच में जो थोड़ा सा तंग कर रही थी. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही सिलेक्टेड ओनली दोस व्हिच वर वेरी डिस्टिंक्ट. वन इज बीइंग डोमिनेटेड, वन इज प्रेस. दैट्स फाइन. लेकिन लाजमी नहीं है. लेकिन जो चीज समझने वाली है कि जो वालदा की तरफ से आई और जो वाले साहब दे आर अलीज. देखो आपने आपने एफएससी में पढ़ा है कोडोमिनेंस का भी, याद है आपको? जी बिल्कुल सर, पढ़े. आपने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी है. ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो कहां से आता है? वो कोडोमिनेंस है. उसमें कोई स्प्रेस नहीं हो रही. ना ए बी को स्प्रेस करना, बी ए को कर रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी बन रहा है. दैट इज व्हाट इज दैट. दैट इज दो लीज आई एमी से और अबू से, और दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं. नो स्प्रेशन, नो डोमिनेंस. बोथ आर शोइंग इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी. ठीक है. लेकिन अलील का वही है. अम्मी की तरफ से ए आया फर्ज करें, अबू की तरफ से बी आया, और वाइस वर्सा. तो ये अलील का कॉन्सेप्ट है.
और यहाँ अम्मी अबू से मुराद सिर्फ अमाद के अम्मी अबू नहीं, आपके अम्मी अबू नहीं, किसी मक्खी के भी हैं, किसी डॉग के भी हैं, किसी बटरफ्लाई के भी हैं, किसी मटर के भी हैं, किसी शलजम के भी हैं, किसी कद्दू के भी हैं। जी और क्वेश्चन? अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था तैयब कि एक हमें पता है कि अच्छा तैयब अब तुम्हारा बाद में क्वेश्चन लूंगा, मुझे पहले और अच्छा बच्चों के से क्वेश्चन कर लो, फिर आप आपसे हम लेंगे जरूर। ठीक ठीक है है सर, सेहत ठीक। साहब, और बच्चों को अगर आप हेल्प आउट कर सकते हैं और क्वेश्चन जिनके हैं वो करें प्लीज प्लीज। द व्हाट वी से द प्लेटफॉर्म इज फॉर यू गाइस, जो क्वेश्चन है पूछें। Yes, sir. I have a question. व्हाट्स योर नेम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। जवेरिया बहादुर। ओके जवेरिया, हाँ बोलो। जी सर, सॉरी मेरा जवेरिया, बीएस कर थोड़ा सा बताओ, मैं बल्कि मुझे पूछना चाहिए आप क्या कर रहे हो। मेरा 3rd सेमेस्टर है बीएस बायोटेक्नोलॉजी में, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। सही है, पूछे जी क्वेश्चन करें। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि एवोल्यूशन जो होती है रैंडम म्यूटेशंस की वजह से होती है, दैट्स ट्रू, जेनेटिकली। लेकिन दैट्स अब ट्रू। एक रिसर्च ऐसे भी हुई है कि एक आर्टिकल अब नया है जिसमें यह है कि जो म्यूटेशंस होती हैं वो रैंडम नहीं होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं। तो अब जब हाँ म्यूटेशन, हाँ हाँ हाँ, बड़ा मुझे खुशी हुई जुवेरिया, आपने ये चीज मेरे भी नजर से गुजरा है। लेकिन अभी बहुत इन्फेंट है, इन्फेंट से मतलब बिल्कुल अभी आई है ये नई चीज। आई डाउट कि ऐसा वो बहुत उन्होंने स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक जीन से एक दो सेलेक्ट करके बस कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि जनरली ये सही है, मैं यही कहूंगा इट्स रैंडम। देखो रैंडम इसको समझना मुश्किल नहीं है। आपके अंदर एप्लीकेशन हो रही है, आपके अंदर एप्लीकेशन हो रही है तो बहुत सारी म्यूटेशन आ रही हैं, क्योंकि एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन गलत भी लग रही है। अब उसको लेके उन्होंने कहा नहीं जी, बाज मौकों पर जो आपका प्रूफ रीडिंग सिस्टम है वो सिलेक्ट ही उनको करता है। तो आई डाउट कि ये वैलिड जनरल टर्म्स में हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक में तो हो सकता है, लेकिन म्यूटेशन का आना डेफिनेटली रैंडम है। म्यूटेशन की सिलेक्शन रैंडम नहीं होती, सिलेक्शन आपका एनवायरनमेंट करता है, वो एनवायरनमेंट के मुताबिक होती है। लिहाजा जो म्यूटेशन आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक होगी वो चलेगी, जो नहीं चलेगी, जो नहीं मुताबिक वो रिजेक्ट हो जाएगी। लिहाजा बट आई 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 लाइक इट वेरी मच कि आपने पढ़ा वो, दैट्स वेरी 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 गुड। अच्छा मैं आपको आप लोगों को एक बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी डेली साइंस न्यूज के नाम से है, उसके वेबसाइट पर जाएं तो उधर से आप अपने आप को अगर कर लेना सब्सक्राइब करें तो आपको वो हर हफ्ते साइंस की न्यूज भेजा करेगी, तो वो भी पढ़ा करें। मैं सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ। वंडरफुल क्वेश्चन वेरी। आगे एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। सर एक और बात। हाँ जुवेरिया, तैयब ने मुझे से लड़ना है, इससे पहले कि तुम चलो कर लो, फिर उसके बाद तैयब के पास जाते हैं। हाँ पूछो क्वेश्चन। ओके सर, आप उनसे ही पूछ लें। नहीं नहीं आप कर ले कोई बात नहीं। सर मैं ये कह रही थी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अभी ये मतलब इतना जनरल सा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर किसी लेवल पे आके ये प्रूव हो जाता है कि म्यूटेशंस होती हैं वो रैंडम नहीं होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, तो फिर ये किस तरह से एवोल्यूशन को सपोर्ट करेगा? ये तो फिर एवोल्यूशन के बिल्कुल ही डायरेक्ट इसके नहीं 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 मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन तो बेसिकली ये एवोल्यूशन का कोई फंडामेंटल अंदर से मेजर ये माइलस्टोन इसका फीचर नहीं है ये कि म्यूटेशन रैंडम होती है ना होती है। एवोल्यूशन का है कि जो म्यूटेशन भी होती हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होती हैं, ये एवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होती है, ये है बेसिकली एवोल्यूशन के अंदर। तो ये ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि इससे हो भी जाए तो एवोल्यूशन की थ्योरी को कोई मसला हो। वैसे भी हम जब के पैदा आए हुए हैं, आपको पता है हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक न्यूज आती है कि आइंस्टाइन की थ्योरी के या डार्विन की थ्योरी। आइंस्टाइन की ये बात शायद गलत तो पता लगता नहीं, और इस तरह डार्विन की। तो इतना आसान नहीं होता, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं ना आपके सब्जेक्ट के, जैसे बायोलॉजी में इवोल्यूशन है, फिजिक्स में जनरल रिलेटिविटी है या क्वांटम फिजिक्स है, ये इतने आसानी से नहीं इनको रद्द किया जाता, इसके लिए बहुत टाइम लगता है और इसको बड़ा देखना पड़ता है। तो मैं इवोल्यूशनिस्ट, मैं फिजिसिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन बायोलॉजिस्ट हूँ। मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में ही नहीं, इस जमीन पर भी नहीं, जितनी भी कायनातें होंगी, जितनी भी जमीनें होंगी जिन पर, और जो मुझे नजर आ रहा है बीइंग ए बायोलॉजिस्ट की लाइफ और भी बहुत सारी जगह पर है, तो उसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम उधर भी वैसे ही करेगी जैसे इधर कर रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, इसको आप नहीं कर सकते आराम से। जी आगे क्वेश्चन। हाँ भी तैयब तुम आ जाओ पहले, उससे पहले क्योंकि और क्वेश्चन करने आए। हाँ तैयब क्या कह रहे थे?
अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि एज वी नो कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना, उसमें जितने भी सेल्स हैं उनका डीएनए सेम है, ठीक है ना? हाँ तो ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब वो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो हम जितने भी बॉडी के सेल्स हैं हम सबकी, या कम से कम बहुत सारे सेल्स की हम सीक्वेंसिंग करते हैं। हाँ ऐसा ही है। जिस तरह की हमें पहले ही पता है कि सारी हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनका डीएनए सेम है, तो हम इतने ज्यादा सेल्स का डीएनए करने के बजाय सिर्फ एक सेल का डीएनए करके ये क्यों नहीं कह सकते कि हमने वो जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो जितने इसकी वजह ये नहीं नहीं, उसकी वजह ये है कि आपको पास डीएनए की क्वांटिटी भी तो होनी चाहिए ना एनालिसिस करने के लिए। एक सेल से तो बहुत कम डीएनए ना होने के बराबर निकलेगा। वो कि वन सिंगल सेल जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है इस टाइम कैंसर वगैरह में, क्योंकि कुछ हमारे थ्योरी ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ सेल टू सेल वेरी कर रही हैं, एक ही टिश्यू में सेल टू सेल वेरी कर रही हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन और उसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड फिर हम मटेरियल इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं। लेकिन जब आपको इन्फॉर्मेशन वही मिल रही है जो आप चाहिए, यानी कि जीनोम की सीक्वेंस करनी है, तो आप क्यों इतना महंगा सामान लेके एक ही सेल की लें? क्योंकि एक सेल तो आपको ना होने के बराबर डीएनए मिलेगा ना, आपको कुछ ज्यादा डीएनए चाहिए होता है। जब आप इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना डीएनए बेस, आपको पता चलेगा कि डीएनए की क्वांटिटी कितनी मैटर करती है। तो जितने सेल्स होंगे क्वांटिटी भी उतनी होगी। तो सेल ज्यादा होने से आपको नुकसान तो कोई नहीं ना हो रहा, जीनोम तो वही है ना। ये तो बल्कि फायदे वाली बात है। ठीक हो गया सर। जी आगे भाई कोई और क्वेश्चन करें प्लीज। आई लाइक इट के बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। मुबीन अस्सलामुअलैकुम। कौन बोल रहे हैं? मैं सहर बात कर रही हूँ। मेरा Sahar, can क्वेश्चन you ये है introduce? कि No, Sahar, please introduce yourself first. सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एमएससी फ्रॉम यूएफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा अच्छा ठीक है, फाइन। सो नाइस टू सी के मेरा क्वेश्चन दूसरे ये बच्चे भी हैं। बोले बोले बोले। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, ये जो कॉन्सेप्ट है एपिजेनेटिक्स का, ये क्या है बेसिकली? इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे सर थोड़ा सा? हाँ श्योर। एपिजेनेटिक्स एक्चुअली, हाँ देखिए, जेनेटिक्स ये होती है कि जो जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं जीन्स के थ्रू, उनमें अगर चेंज आए तो म्यूटेशन के थ्रू आ सकती है। ठीक है, ये जेनेटिक्स है जिसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। इसमें म्यूटेशन, इसमें सुन एनवायरनमेंट भी तो रोल। मेरी बात सुनने पहले, ठीक है? अभी मैं जेनेटिक्स की आपको बात कर रहा हूँ। जेनेटिक्स डील्स विद आवर डीएनए, ठीक है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स में जो चेंज आ रही है और उसकी वजह से। एपिजेनेटिक्स डील्स विद कि उस जीन की रेगुलेशन के लिए जो चीजें इन्वॉल्व हैं उनकी स्टडी करना। रेगुलेशन में मेथिलेशन, मैंने जैसे कहा कि मेथिलेशन, मिसाल को जब जीन मेथिलेशन हो जाती है ना, उस मेथिलेशन की वजह से क्या होता है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है या बहुत हाल्ट हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सो दिस इज एन एपिजेनेटिक फैक्टर, इट्स एन एपिजेनेटिक फीचर, एपिजेनेटिक फेनोमेना, मेथिलेशन। उसकी वजह से आपके जीन एक्सप्रेस ना हो तो जीन होने या ना होने का फिर क्या मतलब, जीन खत्म होगी दूसरे लफ्जों में वक्ती तौर पर। तो ये फिर वक्ती तौर पर होती है। आपके लेट से डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान बहुत सारी जीन्स होती हैं जो मिथिलेट हो जाती हैं और बहुत सारी जीन्स हो जो अनमेथिलेट हो जाती हैं। तो ये वक्ती तौर पर होता है, यानी डीएनए का पार्ट में कोई चेंज नहीं आ रही, डीएनए के कंट्रोल करने वाली चीजों में चेंज आ रही है। ठीक है, तो ये, हाँ आपने कहा एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बिल्कुल एनवायरमेंटल फैक्टर आपके चेंज करते हैं। इवन अब तो इतनी स्टडीज है कि सिगरेट का धुआं जो है वो जीन्स की टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर देता है। दिस इज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती है ऐसा जिस तरह जेनेटिक्स ट्रांसफर होती है, क्योंकि जीन्स ट्रांसफर नहीं हो रही। लेकिन चूंकि एंजाइम्स वही हैं बच्चों में भी जो माँ बाप में है, जो कि एपिजेनेटिक फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, लिहाजा बच्चों में भी फिर उसी तरह से जाकर एपिजेनेटिक फीचर्स कार फरमा होते हैं जिस तरह के वालिदैन। जी ठीक हाँ, है। आपको सब ओके। और लेकिन अगर आपको कोई और आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन है, प्लीज डू आस्क। इससे क्लियर हो गया। ओके सर अदर एक मिनट, पीपल, एक और पूछ, आप आपने जो रिसर्च की है उसका अगर आप लिंक शेयर कर सकें, हम पढ़ना चाहेंगे वो। हाँ श्योर श्योर श्योर। मैं मेरे यार मेरी बात सुनो, गूगल पर चले जाओ, अमाद असलम खान लिख दो, बस तुम्हें उसमें काफी आ जाएगी पेपर्स। ठीक हो गया। ये आसान तरीन तरीका है। अस्सलाम वालेकुम अमाद सर। असलम खान, आई हैव क्वेश्चन सर। हाँ कौन है, बोलो नाम बोलो। सर मोहम्मद उमर पाकपतन शरीफ से हूँ सर, और हाँ एक बोलो। साइंस टीचर हूँ सर। तो सर मैंने गुड आपका भी गुड, सेशन देखा है और मुझे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हैं। और थैंक ये यू। अच्छे सेमिनार्स जो हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, और बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव हैं।
लेकिन सर मैं इस हवाले से जो है एक अपनी अमली मिसाल जो है ना यहाँ आपके सामने पेश करके आपसे रहनुमाई जरूर लेना चाहूंगा। वो ये है कि जरूर। मेरे एक दोस्त हैं, उनके घर बेटी पैदा हुई तो उसको ब्लड में सेल्थीमिया था। ब्लड में क्या था? तो उसमें एक वैसे ब्लड जनरेटेड बीमारी थी जिसे थैलेसीमिया कहते हैं। हाँ, थैलेसीमिया, ठीक है। जी जी। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, एग्जामिनेशन बच्चे की ट्रीटमेंट के हवाले से वो गए, तो हम्म उन्होंने कहा कि आप आपस में कजन्स हैं। उन्होंने कहा जी हाँ जी सर, हमारी कजन मैरिज है। तो उन्होंने हम्म आगे से ये कहा कि आप को चाहिए था कि आप अपनी शादी अपनी फैमिली से बाहर करते। एक बात। दूसरी बात हम्म ये है कि वो कहते हैं कि सर क्या ऐसा पॉसिबल था, या नेक्स्ट हम अपने कजन्स वगैरह की शादियां करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पहले से अपने को टेस्ट करवा लें, जिससे हमें हाँ। हमें पता चल जाए कि क्या ये बीमारी आगे सफर करेगी नेक्स्ट जनरेशन में हम्म या नहीं करेगी। हम्म हम्म तो हम्म उन्होंने हम्म, कहा जी हम्म, इस चीज़ का टेस्ट बाकायदा तौर पर आ चुका है, तो हाँ, इस हवाले से आप जो है ना वो टेस्ट करवा लें। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो ब्रॉड माइंडेड या पढ़ी लिखी फैमिलीज है ना, वहां पर तो ये बात सर एप्लीकेबल है। लेकिन हाँ आपको हाँ मालूम है कि जब हम आउट ऑफ फैमिली शादियां करते हैं, ठीक है, वहां भी हाँ। कोई ऐसी बीमारियां जो मरूसी तौर पर आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन अच्छा। हमारी सोसाइटी इतना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि हम किसी बच्ची के हवाले से या बच्चे के हवाले से कह दें कि जनाब आप इस बच्चे का यार ये हमको टेस्ट कराना चाहते हैं। तो वो कहेंगे जी रिश्ता हम्म। करना ना करना दूर की बात है, आप हमारे बेटों में बच्चों में नुक्स निकालते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। लोग इस चीज को बहुत जो है ना वो कंजर्वेटिवली लेते हैं। हम्म। तो इस चीज की ना जो है शऊर की, इस चीज की जो है ना पब्लिक सेक्टर में आके या पब्लिक प्लेसेस पे इस चीज के बारे में आगाही, वाकफियत मेडिकल हम्म। जो इदारों को चाहिए कि इस चीज के हवाले से लोगों को हाँ, अवेयरनेस ठीक दें। है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, मैं ठीक है इसमें थोड़ा सा तो आपको ऐसे, ठीक है, मैं समझ गया आपको। इसका मैं जी बायोलॉजिकल एक आपको रीजनिंग बताता हूँ, कजन मैरिज में होता क्या जी है बेसिकली। जी जी वैसे तो जी नॉन कजन मैरिज में भी मसाइल हो सकते हैं इस तरह के, लेकिन वो उसमें रेशो बहुत कम होती है। इसमें रेशो जी इसलिए जी बढ़ जाती है कजन मैरिजेस में कि ये ज्यादातर और डिसऑर्डर रिसेसिव है। जैसे कि थैलेसीमिया की आपने बात जी की, जी तब रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं जी तो कजन्स में पीछे से दादा, परदादा, चाचा, मामा आपस में शादियां उनके लड़कियों की होती रही हैं। तो जी एक ही तरह की जो जीनोटाइप है ना डिजीज कॉजिंग, वो बहुत एहतमाल हो जाता है कि आपकी पुप्पो की बेटी में भी होगी और आप में भी होगी, या आपकी मामू की बेटी में भी होगी आप में होगी, या वाइस वर्सा। तो एहतमाल जी ज्यादा हो जाता है। तो जहां जी ये 1% एहतमाल होता है, वहां ये 10% हो जाएगा। तो इट्स ह्यूज ह्यूज। तो इस वजह से, जी और मैं बिल्कुल सोशल लेवल पर अगर मैं बात करूं, मैं एग्री करता हूँ इसके टेस्ट शादी से पहले मस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल ऐसा होना चाहिए। ये जो 3-4 जी जी टेस्ट हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए लाजमी होने चाहिए टोटली। जी जी। नेक्स्ट। तो यानी नेक्स्ट। इसकी प्रिकॉशंस आप यही चाहते हैं कि ये जरूरी है, इसको फॉर्मुलेट होना चाहिए। इसको फॉर्मुलेट होना चाहिए, तो बल्कि चलें सर। बेला ये तो कौमी असम्बली वालों को हमें भेजना चाहिए कि भाई आप करें कुछ। हम तो बेचारे टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, हम तो अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा आगे सर जी। मैं ना एक एक सिर्फ 1 मिनट का और बात करना चाहूंगा। हाँ, ठीक है, बोलो वो बोलो भी बोलो। आपकी इस डीएनए के मतलब ही है और जीन्स के मतलब ही है, उसके बाद मैं इजाजत हम्म चाहूंगा। मैं आपको बहुत ज्यादा वक्त हम्म। ले रहा हूँ, माजरत हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, कोई उसमें बात ये नहीं। है कि लाहौर में सर एक डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, और हम्म। वो बकायदा तौर पर प्रोफेसर हैं, अरशद चौहान उनका नाम है। ठीक हाँ है, हाँ, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट उनका क्लिनिक है। ठीक है। ठीक है, और वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, हम्म। और वो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में वो पढ़ाते हैं, और बहुत सारी आगे। गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो ओके। उनकी शागिर्दे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, अब क्वेश्चन ये तो कि करो। उन्होंने वहां पर बकायदा तौर पर एक लिख के लगाया हुआ है एक तरीकाकार जो है वो जेनेटिक्स के हवाले से, कि अगर इसके हम्म यहाँ कोई बेटा या बच्ची पैदा या औलाद ना हो तो वो हमसे ये तरीकाकार जो है करवाए, तो वो स्पर्म्स का ट्यूब्स के अंदर रख के कुछ दिनों के बाद उसकी फर्टिलिटी को उसको प्रोड्यूस करना, और ये इस हवाले से। हम्म। तो इस चीज को उन्होंने बकायदा तौर पर वहां पर इसको लीगली तौर पर गवर्नमेंट यानी कि अदालत का फैसला भी वहां लगाया हुआ है कि ये गैर शरई या गैर आईनी नहीं है, ये इस्लामी तरीका है। कोई तो के नहीं इस नहीं, हवाले से सर आप क्या लेकिन एक कहते हैं? मिनट, हाँ, मेरे ख्याल में अगर इस वास्ते करेंगे मेरा बेटा पैदा हो, तो मैं तो इसके एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में जी 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 ये ये एथिकली, मेरा मेरा ख्याल है कि एथिकली सही जी है। जी 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 बाकिया के आप बेटे के लिए ये करें, बेटियों को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन मैं जी जी भाई, ठीक है, ओके। वी वांट, ठीक है, आपके सोशल लेवल के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं और बायोलॉजिकल भी हैं ये। लेकिन मैं चाहता हूँ बायोलॉजी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। जी, और क्वेश्चन हैं, बोले बच्चों। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन इधर मुझे जो आए हुए हैं, मैं उनको देख लूँ एक नज़र, और देन वी विल कंक्लूड इट। अच्छा, ये कैन यू हेयर मी गाइस, व्हाट सर प्लीज
उर्दू में बात करें। अस्सलाम वालेकुम यार प्लीज उर्दू। आई एम यार उर्दू देखें, उर्दू में इज फाइन, लेकिन नाउ यू आर डूइंग योर बीएस और एमएससी एंड ऑल ऑफ योर सिलेबस इज इन इंग्लिश, सो कीप इन माइंड कि थोड़ा सा इंग्लिश को भी समझने की कोशिश करें, और जहां ना समझे मुझे पूछेंगे सर ये क्या कहा था आपने। अच्छा क्वेश्चन 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 कांग्रेचुलेशन सर अमाज। अच्छा रबाब बसरी, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। अच्छा ओके, हाउ डज जीन रेगुलेशन रिलेट टू म्यूटेशन। हाँ, ये सिद्रा ने पूछा है कि हाउ जीन रेगुलेशन कैन बी रिलेटेड विद म्यूटेशन। जो मैंने पहले बात बता दी कि म्यूटेशन अगर प्रोमोटर में आए तो ऑब्वियसली जीन का रेगुलेशन इफेक्ट हो जाएगा, तो इस सेंस में ये होता है। सर विच टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर जीन टेस्टिंग, ये सुहेल असलम ने पूछा। तो सुहेल, ये डिपेंड करता है कि आप किस लिए टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। आप एक टेस्टिंग ये भी है कि कोई कत्ल हो गया तो उसमें भी आप डीएनए टेस्ट करवाते हैं, एक ये भी है कोई बीमारी है तो उसके लिए भी करवाते हैं, तो डिपेंड करता है। सर मेरा ख्याल है कि जब कोई जनरेशन कजन मैरिज की बात हो गई है। सर इवोल्यूशन को जेनेटिक्स कितना सपोर्ट करता है। जेनेटिक्स गिर जाएगी अगर इवोल्यूशन को बीच में से निकाल दें। सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब अपनी एग्जिस्टेंस की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर डिपेंड करते हैं। ये फंडामेंटल पिलर है बायोलॉजी का, इसके बगैर आप नहीं समझ सकते लाइफ साइंसेस को, बायोलॉजी को। तो जेनेटिक्स क्या, सेल बायोलॉजी क्या, दे आर नथिंग विदाउट। आई मीन अब जब जेनेटिक्स की बात करते हैं सिर्फ मेंडेलियन लॉज की तो बात नहीं ना कर रहे, हम पूरी जीन की बात कर रहे हैं ना, आपका पूरा जीनोम की बात कर रहे हैं। जीनोम मेरे में, मछली में, एलिफेंट में, बटरफ्लाई में, प्लांट्स में है, तो कोई मानी है ना इसका, ऐसे ही है बस। ऐसे ही किसी अपने आप ही पैदा हो गया इनमें जीनोम। भाई कोई कोई नेचर ने, कुदरत ने कोई तरीका किया होगा ना उसका, तो थ्योरी उस कुदरत के तरीके को वाजिया करती है। सर डू यू एग्री विद इवोल्यूशन। जाहिर बात है, मैं बायोलॉजी का बंदा हूँ, तो कैसे हो सकता है बायोलॉजिस्ट इवोल्यूशन को ना एग्री कर रहे हैं। जब कोई थ्योरी हो सकता है, थ्योरी इससे स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट। अच्छा तो सर प्लीज टेल अबाउट कैंसर। अब ये कैंसर का ये बहुत जनरल क्वेश्चन, कैंसर क्या है, मतलब जब कभी हम कोई करेंगे कैंसर के ऊपर टॉक, तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट कैंसर। जनरली आप मेरी ये देख लीजिएगा टॉक, उसमें मैंने कैंसर की बात की है। सर कैंसर हेरिडिटरी कैरेक्टर है, गुड क्वेश्चन। कुछ हो भी सकते हैं, जैसे कि ऐसे कैंसर हो जो कि लेट से आपके जिसमें आपके जर्म सेल्स में किसी तरीके से इफेक्ट होते हैं और उनमें से ट्रांसफर हो जाता है, देन दैट कैन बी हेरिडिटरी। अदरवाइज ये नॉन हेरिडिटरी है। अदरवाइज ये 90% से भी ज्यादा ये सोमैटिक है, नॉन हेरिडिटरी है। लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी जरूर हो सकती हैं जो माँ बाप से ट्रांसफर हुई, तो म्यूटेशन कैंसर काज कर सकती है, ये हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे में म्यूटेशन एक ऐसी है जिसमें कि P53, खुदा ना करे, P53 की जीन इस तरह म्यूटेट हुई हुई है कि वो अपना काम सही तरीके से ना कर सके, तो आगे जाकर बच्चों में मैं ये ट्रांसफर कर सकता हूँ म्यूटेशन, दैट इज ट्रू। लेकिन कैंसर ऐसा जैसे जैसे इन्फेक्शियस डिजीज इनहेरिटरी हो सकती है, या जैसे कुछ जेनेटिक इनहेरिटरी हो सकते हैं, वैसे ये नहीं है। ये कैंसर बेसिकली सोमैटिक सेल्स की डिजीज है। नेक्स्ट वेबिनार सर, दिस इज गुड। ओके ओके गाइस, मेरे ख्याल में ये हो गया। इसकी आपको वीडियो आपको मिल जाएगी। अच्छा, और आप रिकॉर्डेड वीडियो भी इसकी ले सकते हैं। और ई सर्टिफिकेट्स का मैं पूछूंगा किस तरीके से करना है। अच्छा, ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सर म्यूटेशन इन प्रोमोटर कैन कॉज अल्टर इन जीन ट्रांसक्रिप्शन। यस इट कैन। सना, ये आपने गौर से सुना तो मैंने इसमें बताया किस तरह। तो व्हाट इज मेंट नॉवल इन बायोलॉजी। व्हाट डू यू मीन नॉवल इन बायोलॉजी। हर चीज रिसर्च में होती है वो नॉवल होती है, कोई चीज जो नॉन नॉवल है दैट इज नॉट ए रिसर्च। अब नावल तो अच्छा लिख सकते हैं अमेरा अहमद का या निमरा अहमद का या मंटो का, लेकिन साइंस में इसी चीज नहीं चलता। सर कैन वी डू केमिकल टेस्ट डिजिटली। सुमेरा ने कहा डिजिटली केमिकल टेस्ट। अच्छा
वेल टेस्ट फैसिलिटेट हो सकता है डिजिटली, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई बंदा बैठा है और इधर कोई कंप्यूटर उसका डीएनए पढ़ ले। आई मीन आई हैव टू हैव इट सैंपल। तो डिजिटली काफी हद तक फैसिलिटेट हो सकता है, लेकिन टोटल नहीं, टोटली। सर एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग जीन्स इन जीन रेगुलेशन। भाई ये आप कोडिंग जीन्स वो जो प्रोटीन बनाती हैं, नॉन कोडिंग जीन्स वो है जो जिनमें आगे से सीरोजेनाइज नहीं होती। लेकिन कुछ नॉन कोडिंग जीन्स ऐसी भी हैं जो कि आरएनए बना रही हैं स्पेशल किस्म के, दैट इज इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन, जैसे माइक्रो आरएनए हैं, लॉन्ग आरएनए हैं। सर एक डिजीज जो फैमिली मियाँ में रन करके हुई इरसैम में फैमिली करने की, अगर नेक्स्ट जनरेशन में वो ऐसे 55 लेग्स में प्रॉब्लम हो जाती। मुझे नहीं समझ आ रही है क्या कह रहे हैं आप यार, प्लीज ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। ये रोमन को छोड़ दें प्लीज, not good because your papers are in English, your books are in English, so try to write in English please। ये रोमन इंग्लिश को छोड़ दें। what is natu sir, what is natu का नेचर, you want nature, यही है ना वो जो एब्रिविएशन की होती है नटू, इट्स नेचर। नेचर क्या है? नेचर बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन है ये, अभी इस पर पूरा हम करेंगे। अच्छा नेचर उसने बाद में लिख दिया, हाँ नेचर, ठीक है गाइस, क्वेश्चन सारे हो गए हैं। आप सहेल साहब आप इधर ही हैं? जी मान साहब। सहेल साहब आखिर में बच्चों को आप अगर बता दें कि ये वीडियोस कैसा हासिल कर सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग की। हमारा सर ये वीडियो जो है ना वो पहले प्रोसेस होगी वीटीवी वालों के जी, थ्रू, जी। डिपार्टमेंट के थ्रू, उसके बाद ये webinar.vu.edu.pk की वेबसाइट पे अपलोड होगी। ठीक है, जी जी ठीक है, गुड। ठीक है सहेल साहब, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। आज काफी बच्चे 100 के करीब माशाल्लाह आए एग्जाम्स के बावजूद, एंड जी दैट जी वाज जी वंडरफुल। जी और आई कांग्रेचुलेट टू एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया सहेल साहब फॉर जी, ऑल द थैंक यू। हेल्प। एंड बच्चों आपका भी शुक्रिया, गुड लक फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम्स, और हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।